So, very good afternoon to all, and welcome all to today's session. My name is Rohit, and I'll be your co-host for this afternoon on this technical analysis session. So, this is the chapter three, technical analysis, understanding about the technical analysis candlesticks patterns. So, request everyone that to just type yes in the chat box if my voice is audible and screen is visible to you all. So I'm sure you must have received the notifications related to the this week on the technical analysis that we have covered about the bullish engulfing pattern, then about the bearish engulfing pattern, about the harami pattern and the doji patterns. So now today I will going to cover about the this session that is on the technical analysis, that how this technical analysis candlesticks patterns plays the role, and how one can take the informed decisions looking at this candlesticks patterns. So I'm having with me Mr. Karan Pai, who is having a vast experience into the capital market and who will going to walk you through on that candlesticks patterns, followed by the some interesting key points area that means covered in the charts and how you have to look out the charts. So with this, I'll hand over the session to Mr. Karan Pai. Karan, all over to you now. थैंक यू रोहित. सबसे पहले गुड आफ्टरनून आप सभी लोगों को. आपने थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस टुडे. एंड सो बिफोर स्टार्टिंग विथ द कैंडल पैटर्न्स, मैं एक बार क्विक एक रन थ्रू करना चाहता हूँ निफ्टी पर एज टू व्हाट इज हैपनिंग इन द निफ्टी. सो अगर आज आपने निफ्टी का चार्ट देखा होगा, काफ़ी ज़्यादा वॉलेटिलिटी. सो ये जो आप चार्ट पर जो यहाँ पर ओपन देख रहे हो, मतलब जो चार्ट आपके सामने खुला है, तो उसमें हम लोगों ने एक चार्ट पैटर्न जो है वो मार्क करके रखा हुआ है. करेक्ट. एंड इफ यू कैन सी, आई एम प्रीटी श्योर कि बहुत लोग को इसमें दिखाई भी दे रहा होगा. सो अगर आप लोग जस्ट एक बार चैट बॉक्स में डाल सको कि व्हाट इज द चार्ट पैटर्न दैट आई एम रेफरिंग टू, ठीक है, वो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा. बिकॉज उससे क्या होगा कि वील हैव डायलॉग इंस्टेड ऑफ अ मोनोलॉग. दैट सर्टनली इज helpful. So we'll wait for a second or so. We'll wait for a minute or so for everyone to type in कि हम लोग क्या पैटर्न यहाँ पर देख रहे हैं ये पॉइंट पर. So those who are attending the session from our YouTube channel, they can type the pattern what they are looking in front of your screen. कि आज क्या पैटर्न बन रहा है निफ्टी 50 का ये charts है. So Karan, if you don't mind, if you can just zoom the chart so that we can see the day chart today कि आज निफ्टी 50 like कैसे चल रहा था. Because today if I talk about, then Nifty 50 which is trading around like this 23,690, and it has broken the this I would say like the support of 23,700 also. So the open was 23,960, the high was 24,665, and currently it is trading at 23,690. So in front of your screen यहाँ पे daily chart है Nifty 50 का. So you have to understand the candles की candles क्या बन रही है, and उसके basis में how the one can take the decision. या सो अगर हम लोग निफ्टी की बात करें तो यहाँ पर जो है हम लोग एक इनवर्स एच एन एस पैटर्न यहाँ पर दिखाने की कोशिश कर रहे थे. सो ये जो आप डाउनवर्ड स्लोपिंग लाइन जो आप देख रहे हो, दैट इज बेसिकली द नेकलाइन ऑफ द कैंडल, नेकलाइन ऑफ द इनवर्स एच एन एस पैटर्न. एंड वहाँ से we did see a breakout of the neckline that was back on 3rd December. 3rd December को एक breakout आया था. एंड देन इंडेक्स ने काफ़ी अटेम्प्ट्स किए ऊपर जाने के. 2 दिन में जो है वॉलेटिलिटी काफ़ी ज़्यादा थी एंड वी सॉ इट एक्चुअली हेड हायर. सो ये दो कैंडल्स अगर आप देखोगे 1 and 2, दिस वाज ऑन 5th of December एंड ये जो है वो 13th of December को जो था. सो उस दिन जो है मार्केट काफ़ी पॉजिटिव हो गया. एंड एक चीज़ जो इसमें मिसिंग थी इन दिस अप मूव वाज अ फॉलो थ्रू ऑन द मंडे कैंडल. 16 दिसंबर के कैंडल में फॉलो थ्रू नहीं आया एंड जो कैंडल था वो प्रीवियस सेशन हाई को ब्रेक करना भूल गया. सो दिस इज अ क्लासिक एग्जांपल ऑफ व्हाट अ बेरिश हरामी इज. हरामी अगर आप देखोगे, सो हरामी इन जापानीज एक्चुअली मीन्स प्रेग्नेंट.
सो अगर आप कैंडल पैटर्न को अगर आप गौर से देखोगे, ठीक है, सो नेक्स्ट डे का जो कैंडल है दैट इज कंप्लीटली विद इन द प्रीवियस सेशन बुलिश कैंडल्स बॉडी, रियल बॉडी, एंड वहां से अगर आप देखोगे देयर हैज बीन अ कंसिस्टेंट डाउन मूव, एक दो तीन चार दिन जो है वो थोड़ा नेगेटिव ट्रेंड में रहा है। नाउ यहाँ पर मेजर क्या हुआ कि 16th को तो फॉलो थ्रू नहीं आया, एंड देन 17th को जो है एक और दिन नेगेटिव गया, एंड देन वी हैड डे बिफोर यस्टरडे 18th को द इंडेक्स काइंड ऑफ halted एट द डाउनवर्ड स्लोपिंग नेकलाइन। कल के सेशन में देयर वाज अ गैप डाउन, एंड वो गैप से जो है सपोर्ट उसने निकाल दिया, जो नेकलाइन जहां पर ये सपोर्ट आ रहा था वो उसने निकाल दिया, एंड देन वी हैव टुडेस कैंडल। सो आज के सेशन में अगर आप देखोगे तकरीबन इनिशियल 40 मिनट के टाइम फ्रेम में इंडेक्स ने ऊपर जाने की कोशिश की, बट इट फाउंड रेजिस्टेंस समवेयर अराउंड द नेकलाइन एरिया इटसेल्फ, नेकलाइन या गैप एरिया दोनों आप बोल सकते हो इसको, एंड देन वहां से जो गिरावट आई, राइट नाउ वी आर स्टैंडिंग एट 23,680 ऑन द स्पॉट। सो डेफिनेटली आज के दिन में वोलेटिलिटी बहुत ज़्यादा है, एंड एक बेरिशनेस जो है बहुत बिल्डअप होते हुए दिखाई दे रहा है एट दिस पॉइंट। यहाँ से आने वाले सेशंस में ये जो नेकलाइन का एरिया है दैट इज 24,100 टू 24,150, वो जो जोन है वहाँ पर थोड़े रेजिस्टेंसेस आते हुए हमें दिखाई देंगे, एंड सपोज की अगर मैं बात करूं देन वी कुड प्रोबेबली सी जोन लाइक 23,400 23,200, that zone to act as a bit of support level, करेक्ट, बिकॉज यहाँ पर एक कैंडल यहाँ पर एक जो कैंडल बनी थी 21 नवंबर को, जो फॉलो अप कैंडल था दैट वाज अ वेरी स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल। सो वो जो जोन है जहाँ पर वो रेड कैंडल बनी थी वो थोड़ा क्रूशल हो जाता है। Now enough about what has happened in the Nifty. So ये जो हमारा सीरीज है वेबिनार का that is basically to cover whatever concept of the day जो भी हम लोगों ने कवर किया है during the week उसके बारे में। So first जो था हमारा that was a doji candle pattern. So doji की अगर मैं बात करूं, हम लोगों ने previous webinars में देखा है कि candle patterns जो है वो multiple types के होते हैं। सो वन ऑफ द कैंडल पैटर्न इज कि जब भी आप दो कैंडल्स को मिलाकर एक पैटर्न जब भी आप बनाते हो देन दैट इज अ मल्टीपल कैंडल पैटर्न, एंड देन देयर आर सिंगल कैंडल पैटर्न्स, मतलब एक ही कैंडल में आपको बहुत सारा इंफॉर्मेशन मिल जाएगा, करेक्ट। सो उसमें जो डोजी है वो बेसिकली मार्केट में इनडिसाइसिवनेस बताता है। नाउ आई रिमेंबर एक्सप्लेनिंग दिस टू यू इन द प्रीवियस वीक आल्सो, बट देन आई एम जस्ट टचिंग इट अप because I want you to understand how the bulls and the bears they play in the market, correct? So यहाँ पर basically क्या होता है, एक प्राइस पर मार्केट ओपन होता है and then during the day ऊपर जाने की कोशिश करता है, नीचे जाने की कोशिश करता है, and at the end of the day bulls and bears दोनों जो है वो थक जाते हैं, I mean they just kind of give up, intraday शायद positions कवर ऑफ करते होंगे, and then it closes somewhere around the open. तो ऐसे में क्या होता है कि ऊपर के और नीचे के जो विक्स है, विक्स एज इन ये अगर पूरा आपका कैंडल है, ये जो आप हॉरिजॉन्टल लाइन देख रहे हो दैट इज बेसिकली रियल बॉडी, एंड जो वर्टिकल लाइन है दैट इंडिकेट्स द हाइज एंड द लोज। सो ऊपर का जो हाई है दैट इज बेसिकली द अपर विक, लोअर का जो एरिया है दैट इज बेसिकली द लोअर विक। सो वो जोन में आपको बुल्स एंड बेयर्स जो है काफी एक्टिव आपको दिखाई देंगे। देन डोजी का नेचर ऐसा है कि उस दिन हम लोग को पता चलता है कि बुल्स एंड बेयर्स दोनों ने अपनी ताकत लगा दी, बट देन एट द एंड ऑफ द डे nobody was confident enough to carry the position. अगर किसी ने पोजीशन कैरी की होती then certainly we would have seen a real body either on the downside or on the upside, लेकिन उस दिन किसी ने पोजीशन कैरी नहीं की, जस्ट स्क्वायर ऑफ करके वो लोग चले गए। सो बेसिकली इनडिसाइसिवनेस जो बोलते हैं मार्केट में वो उस दिन हमें दिखाई। Now next we move on to multiple candle patterns. So अगर आप multiple candle patterns देखोगे तो सबसे पहले जो है या कॉमन जो है that is basically a bullish engulfing pattern. Bullish engulfing pattern अभी engulfing pattern मतलब ये जो previous candle है उसे completely cover up कर देता है, correct? So when I say previous candle तो हो सकता है कि आपकी real body cover करे या विक्स छोड़ दे, या कभी कभी ऐसे होता है कि विक्स भी वो कवर करे, इधर विच इट इज कॉल्ड एज अ बुलिश एंगल्फिंग या एंगल्फिंग पैटर्न इन जनरल। सो मतलब अगर ये कैंडल थोड़ा छोटा होता एंड देन प्रीवियस रियल बॉडी को ही वो कवर करता, then it would have then also it would have been called a engulfing pattern या engulfing pattern certainly। बट ये सिनारियो में जो हम लोगों ने यहाँ पर दिखा है दिस इज बेसिकली अ पिक्चर परफेक्ट सिनारियो। बेसिकली ये क्या बोलता है कि बुल्स इतने स्ट्रॉन्ग थे। Okay, I'll first explain you the rigmarole of this candle. So basically एक दिन नेगेटिव होता है, constant market down 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 आए जा रहा है, एक दिन नेगेटिव में ओपन होता है,
एंड देन वही सेंटिमेंट जो है नेक्स्ट डे सुबह कैरी होता है. सो यू सी अ गैप डाउन ओपन. गैप डाउन ओपन होने के बाद थोड़ा लो आने के बाद जो बेयर्स है उन लोग को लगता होगा कि वी कैन प्रोबेबली बुक प्रॉफिट्स हियर, एंड मार्केट थोड़ा ऊपर जाने की कोशिश करता है. एंड देन द बुल्स दे स्टार्ट कमिंग इन एंड दे स्टार्ट कमिंग इन हेवी. तो कैसे होता है, क्या होता है कि लास्ट टाइम जैसे हम लोगों ने एक्सप्लेन किया था, बेयर्स जो है उन लोग जब भी अपनी पोजीशंस कवर ऑफ करते हैं तो भी मार्केट ऊपर जाता है, एंड देन जब बुल्स फुल ऑन लॉन्ग जाते हैं तभी भी मार्केट ऊपर जाता है. So what happens here is basically, despite the negative open, despite the bears trying to push the prices lower, it's very strong, and जो candle बनती है that becomes so strong कि वो previous day के पूरे range को वो अंदर ले लेता है. That is basically a bullish engulfing pattern. अभी इसका exact opposite is what you would call a bearish engulfing pattern. Now ideal scenario में bullish engulfing, I'm not sure if I have a candle pattern that is ready right now, but then suddenly okay, so no, it is not a bullish engulfing. यहाँ पर लेकिन एक bearish engulfing का example हम लोग को suddenly दिख रहा है. So are you observing these two candles? So I'll quickly run you through what a bearish engulfing is. So bearish engulfing आप देखोगे exactly उल्टा है. So constant uptrend रहा है, and then one fine day जो कैंडल की साइज है वो या तो फिर छोटी होती है या ओवरऑल एक ग्रीन कैंडल होती है, एंड नेक्स्ट डे जो प्रीवियस सेशन का सेंटिमेंट है वही कैरी होता है. सो अगर आप देखोगे 1920 पर जो है मार्केट क्लोज हुआ था, बट नेक्स्ट डे इट ओपनड एट 1970, इट टेस्टेड अ हाई ऑफ 1990, एंड देन इट फेल डाउन सो बैड कि 1870 का उसने पहले लो रजिस्टर किया, एंड देन इट क्लोज्ड एट 1890. So all in all, a constant uptrend होता है, and then there is a fall. That basically signifies a bearish engulfing pattern. Now bullish engulfing and bearish engulfing का example मैं आपको यहाँ पर दिखा देता हूँ, ठीक है. Constant up move रहा है, and then again, but यहाँ पर it's not a picture perfect scenario, but if you see ये दिन का जो bullishness था that is carried forward to the next day also. काफी बड़ा गैप के साथ, काफी बड़े गैप के साथ मार्केट जो है ओपन हुआ है. It could be because of any reasons, but because we are looking into technicals only, we don't need to get into the reasons as to why that particular candle pattern, why that particular sentiment was so positive or so negative. Correct. So market positive open हुआ, but bulls जो थे उन्होंने या तो फिर वहां पर profit booking कर ली, या जो bears जो है उन्हें लगा कि this is a good time to short, and then they came in hot, and then जो index है उसे नीचे उसने push किया. So वो सेशन का अगर आप हाई देखोगे तो 22,794 है. Now this is 3rd May 2024 का कैंडल है ये. सो इट अटेम्प्टेड टू मूव हायर, बट देन जो मोमेंटम है, जो ट्रैक्शन है कंटिन्यूस ऊपर जाने का, दैट इज लॉस्ट, एंड देन द इंडेक्स एक्चुअली काइंड ऑफ टैंक्स. सो आपने हाई देखा होगा, इट वाज 22,794, एंड देन जो क्लोज था दैट वाज 22,475, लो वाज 22,350. सो काफी नेगेटिव होने के बाद थोड़ा करेक्शन डेफिनेटली आता है, बट दैट्स इट. The thing to observe here is ये जो कैंडल की बॉडी है that is completely engulfed by the negative candles body. Correct. That is what is important कि previous session की पूरे range को वो अंदर कर लेता है. So that actually shows a engulfing pattern. Now इसका जो exact opposite नहीं बोलूंगा, इसका ही एक iteration इसे हम लोग बोल सकते हैं. For example जब bearish engulfing बनता है तो mood जो है, जो sentiment जो है वो थोड़ा negative की तरफ हो जाता है. Correct. And इसमें काफी evident है कि the bears have taken control. बट जो एक हरामी पैटर्न होता है, जो जैसे मैंने आपको बोला कि इट रिजेंबल्स अ प्रेग्नेंट वुमन. सो बिकॉज आई विल शो यू, आई क्लोज ऑल द अदर फाइल्स. या So अगर आप देखोगे, this resembles the female body, and this resembles the pregnant lady. Correct. So basically a small candle under within the range of the previous session candle. So that becomes very significant here. So assume this. Constantly market नीचे गिर रहा है, and एक दिन sentiment जो है वो इतना खराब होता है कि market काफी गिर चुका है. फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर आप देखोगे 1880 पर इट ओपन, 1890 का हाई मार्कर, 1830 का लो मारा, एंड देन इट क्लोज्ड एट 1850. सो नेक्स्ट डे क्या होता है कि कहीं ना कहीं आप ये कैंडल जब यहाँ पर आप लोअर विक से भी बोल सकते हो कि देयर इज प्रॉफिट बुकिंग कमिंग इन. जो जिन लोगों ने भी शॉर्ट किया रहेगा उन लोग प्रॉब्लली प्रॉफिट बुक कर रहे हैं,
एंड देन वो सेंटिमेंट जो है नेक्स्ट डे कैरी होता है, एंड देन देयर इज अ गैप अप ओपन. गैप अप ओपन होने के बाद देयर इज एन अटेम्प्ट टू मूव डाउन एंड देन द इंडेक्स, बट इंडेक्स ट्राइज टू पिक अप. सो यहाँ पर बेसिकली ये बता रहा है कि जो बेयर्स की जो सेलिंग कैपेबिलिटी थी वो कहीं ना कहीं अरेस्ट हो गई. अभी उसके वजह से क्या होता है कि देयर इज अ शिफ्ट इन द सेंटिमेंट. व्हाट दैट मींस इज पीपल हु आर continuously shorting the market are suddenly, either not interested in shorting anymore, but they are not very convinced that the market is very positive. नहीं तो फिर क्या होता था कि कैंडल साइज जो है वो काफी बड़ा हो जाता था, बट कन्विंस नहीं है कि ये पॉइंट इज अ गुड टाइम टू बाय. सो दिस बेसिकली शोज कि एक आपका जो सेंटिमेंट है वो शिफ्ट हो रहा है. इट इज शिफ्टिंग फ्रॉम बीइंग अ बेरिश सेंटिमेंट टू स्लाइटली लेस बेरिश इज वुड बी द राइट वर्ड, बट टू अ स्लाइटली पॉजिटिव सेंटिमेंट. सो इसका इंटरप्रिटेशन ऐसे होगा कि बिकॉज देयर वाज सम सॉर्ट ऑफ प्रॉफिट बुकिंग इन द प्रीवियस सेशन. अगेन दिस इज जस्ट हाइपोथेटिकल. यहाँ पर हो सकता है कि इंट्राडे स्क्वायर ऑफ व्हाटएवर इट इज, and ये जो gap up है this might be because of any other event that could have happened during the night, or US markets में, global markets में जो भी event हुआ रहेगा उसके वजह से ये हुआ होगा. So एक positive open होता है, it attempts to move lower, but then the bears they are not able to push it any lower, and then they just either square off, and then there is some sort of buying interest that pushes the price higher towards 1875, and finally it settles somewhere around 1870. सो ये एक बुलिश हरामी है. इसे बुलिश इसलिए बोलते हैं कि दिस इज नॉर्मली फाउंड एट द फैग एंड ऑफ अ डाउन ट्रेंड. एंड देन वी कम टू समथिंग दैट विल बी आउट टुडे, दैट इज अ बेरिश हरामी. सो बिकॉज बुलिश हरामी आपका एक डाउन ट्रेंड के बाद होता है. नाउ दिस इज अ क्लासिक एग्जांपल ऑफ अ बुलिश हरामी. देयर वाज फॉलो थ्रू एंड देन मार्केट जो है वो कंटिन्यू कर रहा है. दो यहाँ पर इट अटेम्प्टेड टू मूव लोअर, बट देन बाइंग इंटरेस्ट वाज देयर, इट वाज स्ट्रांग, एंड देन वहां से जो है मार्केट कंटिन्यूअसली ऊपर गया. So that was an example, and this also I would say is an example. लेकिन the only problem is that during the day, current day का जो low था that went below the previous session's close. But nonetheless अगर आप real body to real body compare करोगे तो उसे भी हम लोग एक bullish हरामी का designation kind of thing दे सकते हैं. Now this bearish engulfing अगर किसी को देखना है, then this is a classic example. Steady up move tha, it was losing momentum, then one fine day tried to gain momentum. Next day the sentiment was carried, but then the bulls thought that it was not worth buying at this point. It was ideal to book profits and get out of the market, and then we had a negative candle. So this is basically a bearish engulfing pattern. यहाँ तक किसी को कुछ डाउट है कि एनगल्फिंग एंड हरामी में क्या डिफरेंस है कैंडल पैटर्न्स में? एनगल्फिंग कैंडल पैटर्न्स एंड हरामी कैंडल पैटर्न्स में व्हाट इज द डिफरेंस? जस्ट पुट इट इन द चैट बॉक्स. So अगर किसी को कुछ query है regarding to the bearish engulfing pattern and the bullish harami pattern, then you can put in the chat box. So two questions we are having as of now in our chat box. That is, first is where I can get the PDF of this write up actually. So you can visit to simple है accessdirect.in, and वहाँ पे Goodreads section है, under the lunch section it is. So you can explore all the PDFs because that is ultimately uploaded there. Okay. And secondly, Karan, we are having the query that is on our WebEx channel that अगर मुझे bullish या bearish engulfing या हरामी पैटर्न अगर देखना रहेगा तो क्या वो पैटर्न मैं इंट्राडे में देख सकता हूँ, या फिर कितने मिनट्स का टाइम फ्रेम, क्या चार्ट्स ले सकता हूँ मैं? ओके, सो टेक्निकल एनालिसिस जैसे हम लोगों ने पहले भी डिस्कस किया बहुत ज्यादा ग्रैन्युलर है. नाउ वन थिंग यू हैव टू कीप इन माइंड इज कि जितने छोटे टाइम फ्रेम पे आप जाओगे उतना आपका नॉइज बढ़ेगा. हो सकता है कि एक जगह पे आपको एक हरामी दिखे, बट देन द लो इज ब्रोकन, बिकॉज इंट्राडे में नॉइज बहुत ज्यादा होता है. कि इट कुड बी बिकॉज ऑफ एनीथिंग. यूरोपियन मार्केट्स आपका ओपन हुआ, आपने नॉइज देखा है मार्केट में, एंड ग्लोबल मार्केट्स में अगर कुछ होता है देयर इज नॉइज इन द मार्केट. सो द प्रोबेबिलिटी ऑफ अ सक्सेस when it comes to intraday, a short term time frame थोड़ा वो deviate हो जाता है. Again मैं ऐसे नहीं बोल रहा हूँ कि वो कर ही नहीं सकता है. So technical analysis is like driving a car. एक आपको अगर चलाने आ गई तो आप सब चला लोगे. करेक्ट. सो सेम थिंग विद टेक्निकल एनालिसिस. अगर एक बार आपको एक कैंडल पैटर्न पे आपको अगर होल्ड लग गया, देन यू कैन अप्लाई द सेम थिंग ऑन मल्टीपल टाइम फ्रेम्स.
The only difference is you should be able to strike a balance that जब भी आप एक chart देख रहे हो there is equal amount of noise and there is equal amount of trend. ट्रेंड ऑब्वियसली आपको बिकॉज ट्रेड लेना है तो आपको ट्रेंड तो डेफिनेटली चाहिए. नॉइज इज समथिंग दैट यू कैन फिल्टर आउट. सो समथिंग लाइक से अ 15 मिनट चार्ट और अ 75 मिनट चार्ट, करेक्ट. सो वो आपको एक बेटर आइडिया दे सकता है एज कंपेयर टू अ 5 मिनट चार्ट. व्हाई? बिकॉज 5 मिनट चार्ट 1 मिनट चार्ट जो है उसमें आपको नॉइज बहुत ज्यादा रहेगा. वहीं पर अ 15 मिनट चार्ट और अ 75 मिनट चार्ट विल हैव स्लाइटली लेसर नॉइज. एंड जितना कम आपके चार्ट में नॉइज हो उतना बेटर होता है बिकॉज इट गिव्स यू अ क्लियर पिक्चर एज टू वेयर द स्टॉक इज हेडिंग और वेयर द इंडेक्स इज हेडिंग. सो दैट इज वन थिंग. सेकेंड थिंग जो है हम लोग डिस्कस कर रहे थे अबाउट हरामी पैटर्न. सो हरामी पैटर्न्स आर एग्जैक्टली ओके. कैन समवन टेल मी जस्ट बाय लुकिंग एट द कैंडल्स व्हाट इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन अ हरामी एंड एन एनगल्फिंग पैटर्न? I'll tell you one thing, the size of the candles. ठीक है. सो इफ यू लुक एट अ बेरिश एनगल्फिंग हियर, करेक्ट. सो क्या होता है कि कैंडल साइजेस भले ही बड़े हो बट देयर इज अ से इफ इट इज अ बेरिश हरामी देन फर्स्ट कैंडल जो आपका बुलिश होता है, सेकंड कैंडल जो है वो आपका बेरिश होता है. एंड इफ यू सी प्रीवियस कैंडल को, जो नया कैंडल है वो कंप्लीटली एनगल्फ कर लेता है. देन वी हैव समथिंग कॉल्ड अ हरामी. हरामी में क्या होता है, हरामी कैंडल पैटर्न में क्या होता है कि देयर इज अ बिग कैंडल जस्ट बिफोर अ स्मॉल कैंडल. एंड जो स्मॉल कैंडल जो बनता है, जो आपका सेकंड कैंडल बनता है, वो बनता है बिग कैंडल के रियल बॉडी के अंदर या रेंज के अंदर. So it is basically that the bulls or the bears, they are trying to move the market, but they are not going to, they are not strong enough to break the previous session range. So that is why it just shows a shift in the sentiment. यहाँ पर आपको engulfing में कैसे रहता है कि आपको एक थोड़ा confirmation type भी मिल जाएगा because though it opened higher, it opened below the previous session low, yeah, it opened below the previous session open. Correct. So आपको clear cut दिख रहा है कि okay, there is some sort of negativity in this candle pattern. But in a harami, because there is lack of confidence on behalf of the buyers or the sellers, you don't see the second candle to be a very big candle because उतना confidence नहीं है based on the previous trend. Market में जो है उतना confidence नहीं है कि हम लोग इसको strongly long करें in case of a bullish harami pattern and we take the prices above the previous session high. Same thing with bearish candle patterns. Bearish candle patterns में भी आप देखोगे there is constant uptrend है and one fine day एक छोटा सा candle बनता है which is red within the previous session range. So वो भी जो है वो एक sentiment shift बताता है instead of completely telling you that there is a change in the trend. It shows that people who have been going long are no longer interested in going long. Who have been going short are no longer interested in going short. So that is the kind of message that a harami gives and a engulfing candle pattern gives. यहाँ तक अगर किसी को कुछ क्वेरी है, कुछ पूछना है, प्लीज पुट इट इन द चैट बॉक्स. वी हैव अनदर 5 minutes to go. So this 5 minutes I want to dedicate it to the Q&A part. And one thing that I would request is please don't ask us stock specific. Every time आपको मना करने में हम लोग को बुरा लगता है, but then at the same time we also have a job to keep. And अगर हम लोगों ने आपको अगर कुछ suggest कर दिया, then we might not meet in the next webinar. So I would prefer not talking about stocks. Index के बारे में मैंने आपको थोड़ा एक broad view दे दिया है as to what is happening and the major trigger from where we are seeing it is the Fed policy. So उसके बारे में आपने हमारे morning podcast में भी सुना होगा and how it is what exactly was the tone of the Fed when they came up with the policy, when they came up with the 25 basis point cut. So क्या टोन रहा है इंडेक्स का, वो कहीं ना कहीं मार्केट ने कैप्चर कर लिया एंड देन वी हैड दिस आउटकम. सो विल होल्ड फॉर लाइक 2 minutes एंड अगर किसी को कुछ क्वेरी है विल बी मोर देन हैप्पी टू सॉल्व इट. नो स्टॉक स्पेसिफिक. इन पैटर्न फॉर्मेशंस को लेके अगर कुछ क्वेरी है या प्रीवियस सिंगल कैंडल पैटर्न्स जो भी बने थे उसमें अगर कुछ क्वेरी है देन प्लीज पुट इन द चैट बॉक्स. So Karan, it would be great if you can just throw some lights कि जब candles का जब ये gap up opening रहता है या gap down opening रहता है, so how one can analyze कि हाँ जब ये candle cover up होगा market में आगे चल के आगे future के session में, then only one should look out for the support and resistance. Okay, so gap theory जो है रोहित वो थोड़ी different है. So एग्जाम्पल यहाँ पर देखते हैं, ठीक है, यहाँ पर 2 दिन गैप था
but then there was some sort of reason as to why this gap happened. And अगर आप देखोगे कि ये जो एक consolidation phase था उसमें से भी इंडेक्स को बाहर निकलने में it took some time. Why? Because people were not confident enough as to go outright या all in जाने के लिए लोग थोड़ा डर रहे थे. But generally whenever there is this gap, this area, it tends to act as a resistance. Now because it's a downward gap, it tends to act as a resistance, but वहीं पर if it is an upward gap, then it tends to act as a support. And जैसे ही वो समझे कि वो गैप एरिया निकल जाता है, then you might see the trend continue. So ये continuous up move था. यहाँ पर there was a bit of a gap down. यहाँ पर बहुत hesitation के बाद finally the gap was filled. The index actually moved above that gap, and then we saw a smooth up move. So this is how you look at gaps. So now we'll take a 30 seconds pause, and you can type in your questions. So I think like we have answered the major of the questions here. The major of the answers we have already given. So we'll just take the 30-second pause, and then we'll end the session. So looks like we don't have any query. So that's it for today, guys. आपको हम लोग मंडे मिलते हैं, wherein we'll be explaining how the Nifty looks, क्या इंडेक्स में क्या लग रहा है, what to expect during the week. And unlike what we did right now, we'll be doing quite a big deep down analysis. So आज के लिए बस इतना ही. So thank you all for joining in. Hope you guys have a good weekend. Thank you. Thank you so much, Karan, for beautiful insight, and really appreciate your knowledge, the way you carrying and you disseminate to our audience. So thank you once again to all our participants